It took our author 8 long years to write today's book. Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel where today we are going to review Dan Brown's absolutely latest book, The Secret of Secrets. पर इससे पहले कि मैं इस हेवी सी किताब का रिव्यू करूं, आपको बता दूं कि डैन ब्राउन मेरे बहुत ही फेवरेट ऑथर हैं और इनकी सारी किताबें मैंने पढ़ी हैं और उनके रिव्यूज भी किए हैं इस चैनल पर। तो अगर आपने ये रिव्यू वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वॉच दीज वीडियोस नाउ। कुछ के लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और ऊपर आई बटन पर भी। So usually when I do reviews, I always hold the book like this, but please forgive me today because this book has close to 700 pages and because of the hardcover, it is too heavy for me to hold like this. So that's why this review is not going to be like this, but like this. The Secret of Secrets by Dan Brown is about human consciousness. It actually tries to answer the biggest question that we all have in our mind. What happens after we die? What happens after death? This time in this thriller, our favorite symbologist, Professor Robert Langdon, is back in the series, and this time he has a girlfriend. Catherine Solomon is her name. She's a scientist and she's about to publish a path-breaking book. और कहानी जो है ना वो प्राग जैसे खूबसूरत शहर में सेटअप की हुई है जहां पर कैथरीन सोलोमन रॉबर्ट लैंगडन के साथ आई हैं अपनी बुक को पब्लिश करने से पहले एक बहुत ही इफेक्टिव जो है उससे रिलेटेड एक लेक्चर देने के लिए वो इस शहर में आई है, जिस लेक्चर के बाद उनकी पूरी दुनिया बदल जाती है। After Catherine Solomon delivers her lecture at night, the next morning after that, she goes missing along with her manuscript. All the digital and physical copies of her book, they vanish overnight as if they never existed. On the other side, Robert Langdon and Catherine Solomon are also being framed for the murder of a Czech neuroscientist, Dr. Brigitta Gessner, who was supposed to meet them in the morning. She had an appointment with Catherine Solomon, and after that appointment, Catherine is also missing and Dr. Brigitta Gessner is murdered. And both Robert and Catherine Solomon are being charged for that murder. Robert Langdon और Catherine Solomon के पीछे ना सिर्फ प्राग की पुलिस पड़ी है बल्कि उनके पीछे एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन के लोग भी हैं जो किसी को भी किडनैप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे मुश्किल वक्त में उनकी मदद के लिए आती हैं डॉक्टर ब्रिगिटा गेस्नर की असिस्टेंट साशा वेस्ना और यूएस एम्बेसडर इन प्राग, जो कि उनकी बहुत हेल्प करती हैं इस पूरी सिचुएशन से बाहर निकलने में। लेकिन रॉबर्ट लैंगडन एंड ऑल दीज गाइज दे गेट टू नो अबाउट दिस secret project that is run by US military organization, an intelligence project, and this project is being secretly run by US military organization that is behind all these attacks, and this organization will go to any extent to stop the publishing of Catherine Solomon's book. आखिर ऐसा क्या है कैथरीन सोलोमन की इस किताब में जिसको लेकर जो साइंटिस्ट हैं और स्पिरिचुअलिस्ट हैं और यूएस मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है वो सब इसके पीछे पड़ी हैं, उन सबको ये किताब जो है बहुत खटक रही है। अब इससे पहले कि रॉबर्ट लैंगडन इस बात का पता लगा पाए, एक और मर्डर हो जाता है। नाउ दिस टाइम कैथरीन सोलोमन shares a gist of her book with Robert Langdon, and she tells him that her book is only about, it just proves that human consciousness, it doesn't lie in our mind, in our body, inside our mind. It actually exists outside our body, outside our mind, and this concept is called non-local consciousness. क्या रॉबर्ट लैंगडन कैथरीन सोलोमन को ढूंढ पाएंगे? क्या वो उस पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन का पर्दाफाश कर पाएंगे जो किसी भी कीमत पर कैथरीन सोलोमन की बुक को पब्लिश नहीं होने देना चाहती? क्या रॉबर्ट लैंगडन इस सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स को सुलझा पाएंगे? इन सब सवालों के जवाब के लिए आपको पढ़नी पड़ेगी डैन ब्राउन की बुक द सीक्रेट ऑफ द सीक्रेट्स। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट डैन ब्राउन हियर। It took him 8 long years to write this book because he lost his mother 8 years ago. In 2017, after losing his mother, he started questioning and researching a lot about life after death. What happens after you die? And these questions led him to the core idea of this book,
द सीक्रेट ऑफ सीक्रेट्स। इस बुक में ना साइंस है, स्पिरिचुअलिटी भी, हिस्ट्री है, मिस्ट्री भी, एंड इस बुक में इमेजिनेशन है और रियलिटी भी। The book is full of jaw-dropping moments, action-packed sequences, and of course, some eye-opening secrets. For me personally, this book actually, I found it better than the best-selling and the most popular Dan Brown book, The Vinci Code. I found The Secret of Secrets better than that book. Personally, this is my opinion. And आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि इस किताब में ना बहुत बार हमारे हिंदू ग्रंथों का, हमारी स्पिरिचुअल किताबों का, हमारे वेदों का, पुराणों का, भगवान का, उनके सिंबल्स का जिक्र हुआ है, जो बहुत फैसिनेटिंग भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी कि हमारा जो धर्म है या हमारी जो स्पिरिचुअल किताबें हैं वो कितनी एडवांस्ड है। Now I'm going to read my favorite part from this book for you, but before that I want you to understand some simple terms. So there's a portion in the book, there's a part in the book where Catherine Solomon tells Robert Brown that how our brain works. She explains it to him that our brain is like a radio set, and it receives lot of information, just like a radio set receives a lot of frequencies and you have to tune into the right one. Our brain also works in the similar ways, and this tuning to the right frequency is done by something called GABA. Now, GABA's full form is gamma aminobutyric acid. This is an acid that works like a radio tuner, and it filters out all the unnecessary information and only tunes our brains to the right ones. So now that you know that if our brain is compared to a radio set, then GABA is the tuner of that radio set. So here Catherine is talking about an experiment where a dying brain is compared to the dreaming brain. So it says a dreaming brain was similar to a dying brain. In both instances, GABA levels plummeted, lowering the brain's filters, opening the door to wider bandwidths of information. The influx of unfiltered data was the reason dreams manifested as such illogical jumbles of images and ideas. Furthermore, it explained why, within seconds after waking, even the most vivid dreams began to fade despite our desperate attempts to remember them. The brain reset, GABA levels increased, and filters re-engaged, purging the information and once again regulating our perception of reality. So I hope you like this spoiler-free review of Dan Brown's absolutely latest book, The Secret of Secrets. And if you did, then please share this video with all the Dan Brown fans you know. And मैं आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नए वीडियो के साथ. तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हंसते रहिए.